Hello students, myself Professor Ashok M. Jain. In this lecture I am going to talk about some numerical based on the two-port network. This is part 2. Already I have developed part 1 also, and in future I will develop part 3 also. Okay, so in this part I am going to discuss some numerical based on the two-port network. This is the problem number 1. Find Z and H parameters. Z parameter means impedance parameter and hybrid parameter. Okay, so you can say this is the two ports are there, port 1, and we know current is incoming current I1, and port 2, this is the port 2 and this is the incoming current I2. Okay, so if you are going to write the equation, so you can write the loop current equation, loop current method, or KVL. I'm going to write some equation based on the loop current method, or that is a modified version of KVL, right? So when you are going for loop current method or Maxwell's loop current method, so in place of branch current we will take the loop current. So loop 1 I1, clear, and this is also incoming current I2. So जहां आपके पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 वहां इनकमिंग करंट करना है, और बीच वाला एक पोर्ट और है, यू कैन टेक I3, whatever the direction you want, you can take clockwise, you can take anti-clockwise, whatever you want, but this is incoming, this is also incoming. Now write the loop equation, loop 1. Okay, write the equation. I1 is flowing in 5 plus 3, 8 I1. At the same time, in 3 ohm में I3 भी है, so but it is downward, I1 is downward और I3 is upward, so minus 3 I3 equal to V1. This is equation number 1. V1 equal to this. Okay. Loop 2. Loop 2. This is equation number, say, okay. Loop 2. So loop 2, this is I am taking loop 2. So current I2 is flowing 6 plus 2, 8 I2. 8 I2. 6 plus 2, 8 I2. At the same time, in 2 ohm is a common branch between 3 loop and 2 loop. So it is I2 is downward, I3 is also downward. So it is plus 2 I3 equal to V2. Okay, so we got equation number 1. This is equation number 2. We have loop 3. Loop 3. This is loop 3. So in loop 3, current I3 is flowing 3 plus 4 plus 2. 2 plus 3, 5 plus 4, 9 I3. Okay, 9 I3. At the same time, in 3 ohm में I1 है, so 3 I1. But this is upward, this is downward, so minus 3 I1. At the in this loop 2 is there, 2 ohm, and 2 ohm में I2 भी है, so it is downward, it is also downward, plus 2 I2 equal to no source equal to 0. Right? Now you can see here, I want the two equations, V1 in terms of I1 and I2, V2 in terms of I1 and I2. I don't want I3. Please याद रखो. I want V1 and V2 in terms of I1 and I2. I don't want I3. So from 3, that is the purpose of 3, you can find I3 equal to, from 3 I3 equal to what? ये 3 उधर जाएगा, so plus 3 I1 upon 9 हो जाएगा. ये plus 2 उधर जाएगा तो minus 2 I2 upon ये 9 से डिवाइड कर देंगे तो 9 हो जाएगा. इक्वेशन नंबर 4. Clear? And we will put the value of 4 in 1 and 2. We are putting the value of 4, that is I3 in 1 and 2. So you will get, if you put, so we will get V1 equal to what? 8 I1 minus 3. I3 की वैल्यू कितनी है? 1 by 3 I1. 3 by 9 means 1 by 3 I1
minus 2 by 9. ओके, सो हमने क्या किया है, यहाँ पर v1 इक्वल टू 8i1 है, माइनस 3 आई डोंट वांट i3, सो यहाँ रख दिया. तो आई एम गोइंग टू मॉडिफाइड, माइनस 3 कट जाएगा तो i1, सो यू विल गेट 7i1. ओके, 8 minus 1, 7i1 minus minus plus 2 into 3, 6 by 9 i2. So I got v1 in terms of i1 i2. This is equation number A. That is the okay. So I got the v1 equal to this. कितना आ रहा है? v1 equal to 7i1 plus 2 by 3, yeah, 6 by 9 i2, that is 2 by 3 i2. Okay, similarly if you put the value of 4 in 2, राइट ना, तो इसमें भी रखा तो v2 इक्वल टू क्या आएगा, v2 इक्वल टू 8i2, यहाँ रखेंगे 8i2, राइट ना, 8i2 प्लस 2, i3 की वैल्यू कितनी है, i3 की वैल्यू आई डोंट वांट दिस, i3 इक्वल टू कितना है, ये 1 by 3 i1 minus 2 by 9 i2. So I am getting 2 by 3 i1. So v2 equal to, I am getting 2 by 3 i1, this 2 by 3 i1 और 8 i2 और minus 4 by 9, 2 into 2 4. So you will get plus 8 minus 4 by 9, right? So not 72 में से 68 by 9 i2, you will get equation number B. So I got these two equations, right? These two equations I am getting v1 and v2 in terms of i1 and i2. Okay, so I am getting this 2 by 3 i1 plus 68 by 9 i2. Okay, so on, we know the standard equation of Z parameter. Standard equation of Z parameter क्या है, v1 v2 in terms of i1 i2 कितना है, z11 i1 plus z12 i2, v2 equal to z21 i1 plus z22 i2. So this is the standard equation, right? So I got the standard equation of Z parameter. Compare x and a and y with v. So you will get z11, z1, z21, z22. So if you compare with standard equations, right? So you will get these values. So if you compare with standard equation z11 x and this, okay, so 7 ohm, 12 2 by 3, z21 2 by 3 and z22 68 by 9 ohm. So these are the answer of the Z parameter. I am getting it. Okay, so I am getting Z11 7 ohm, Z12 and Z23 2 by 3 and Z22 68 by 9. Okay, now I have to find the H parameter also. Okay, so if you are interested for finding the H parameter, so how to do it, मैं एक काम करता हूँ, एक separate sheet open करता हूँ. I am rubbing it. Okay, so this is the separate sheet I have used. Now I have to find H parameter also. Find H parameter also. Okay,
अगर आपको H पैरामीटर निकालना है तो व्हाट वी हैव टू डू, वी नो Z parameter equation. What was the Z parameter equation? I got it. What was the Z parameter equation? We got V1 equal to what? V1 equal to what? 7 I1 plus 2 by 3 I2, and V2 equal to, we got 2 by 3 I1 plus 68 by 9 I2. I got equation number A and B. Please be careful about it. We got these two equations in the last slide. Okay, V1 in terms of I1 I2, V2 in terms of I1 I2. I got 7 ohm, 2 by 3, 2 by 3, and Z22 is 68 by 9. So these are the equation number A and B. We got it right. Now equation of H parameter. Equation of H parameter. What is the equation of H parameter? इक्वेशन ऑफ एच पैरामीटर क्या है? जस्ट हियर टेल मी, एच पैरामीटर क्या होता है? V1 and I2 are represented in terms of I1 and V2. यहाँ प्लस साइन है. This is the standard equation of H parameter. V1 and I2 represented in terms of I1 and V2. 1 1 H11, 1 2 H12, 2 1 H21, and 2 2 H22. This is the equation, say C and D, equation of H parameter, right? Now please see here, I want to find the answer. I don't want any calculation, just we have 4 equations. मेरे को मगअप नहीं कर रहा है, कुछ नहीं मालूम कि हाउ टू डू इट. मेरे को सिर्फ इतना मालूम है कंपेयर करना है. H11 निकालना है. ये क्या है? देखो मैं अभी इसको रीअरेंज करूंगा ए और बी को. क्यों? क्योंकि ये वैल्यू के टर्म में है. हमको इसको रीअरेंज नहीं करना, हमको इस फॉर्म में लाना है. V1 V2 इन टर्म्स ऑफ I1. ओके, देखो ये V2 है, I1 I2 है. V2 I1 I2 है. जस्ट सी हियर, V2 I1 एंड I2, राइट ना? सो V2 I1 एंड I2, राइट. प्लीज, सो देखो यहाँ पर भी I1 I2 और V2 है, यहाँ पर भी I1 I2 और V2 है. रीअरेंज B. I am not going to mug up. Okay, rearrange B. I2 चाहिए, so I2 equal to what? यहाँ I1 है, so I2 equal to, यहाँ आएगा I1 तो क्या आएगा? 68 by 9 I2 equal to, this will become here equal to, so यहाँ आएगा -2 by 3 I1 प्लस ये इधर ही है प्लस V2. so आ गया ना? I2 in terms of I1 V2, I2 in terms of I1 and V2. So I2 equal to what? ये उधर जाएगा, so -2 by 3 into 9 upon 68 I1 plus 9 upon 68 V2. Clear? Equation number E. So I2 in terms of I1 V2, I2 in terms of I1. So you can compare E and D and E. Compare D and E. If you compare D and E, H21 equal to what? minus 18 upon 3 into 68. Okay. -3 by 34. So I am getting -3 by 34. That is the answer I am getting it, right? H21. Okay, next, this H22 equal to what? This H22 equal to 9 by 68.
Okay, now what is the value of H21? यूनिट क्या होगी I2 upon I1, नो यूनिट. H22 equal to I2 upon V2, क्या होगा मो. देखो क्लियर. So I got these two values. Now I want H11 and H12 also. H11 and H12. Please see equation क्या है. V1 in terms of I1 V2. V1 V2 I1. I don't want I2. Is it clear? V1 V2 and I1 term is there. No I2. So एक काम करते हैं. Put the value of E. Put the value of E. ये कहाँ से आया था? B से ना. Put the value of E in A. क्योंकि ये B से ये आया था आपने. So put E. Put E in A. Clear? When you put the value of E in A, so क्या आएगा? V1 equal to 7 I1 plus 2/3 I2 और I2 की वैल्यू ये है कितना? 2/3 I2, राइट. सो 2/3 I2 कितना है? माइनस 2/34, राइट ना. सो 3 कट गया, 3 और ये 2 और ये 34. So minus 3/34 I1. Sorry. Minus 3/34 I1 plus 9/68 V2. So I'm putting this value. Okay. So you will get another equation. So V1 in terms of I1. So V1 equal to क्या आएगा? 7 I1 minus this cancel 2/34 1/17 into 7 और 3 कट गया 1/7 minus 1/17, राइट ना. I1 प्लस ये 3 हो जाएगा ये. सो 3 प्लस यहाँ आएगा 3/34 V2, right now. So I am getting 17 into 7, just wait, 7 into 17 minus 1 equal divided. So I am getting 118. V1 equal to 118 upon 17 I1 plus 3/34 V2. Equation number F. Equation number F. Okay. So earlier I got these two equations. ये पहले आ गया था. Okay. And we got, now compare what? Compare with C and F. Compare C and F. If you compare C and F, H11 is what? H11 118 upon 17. H11 क्या होगा? V. H11 क्या होगा? V upon I, that is ohm. Okay. And H12 V1 upon V2 no unit. H12 क्या होगा? This कितना? 3/34. So I got these two answers. Okay. So I got these four answers: H11, H12, H21 or H22. Okay. So these are the two questions. This is the first problem we have solved. I am coming back. Okay. I am rubbing it. Okay. Question number 2 I am going to solve.
This is the question number 2. Find y parameter. Find y parameter. ओके, अगर आपको y पैरामीटर निकालना है, सो अगर आप इसको KVL लिखेंगे तो वी हैव 3 लूप्स, लूप 1, लूप 2 एंड लूप 3. ओके, you will get z parameter. KVL लिखेंगे तो you will get z parameter. Then you have to find y parameter. और अगर डायरेक्टली KCL लिखते हैं, if you write the KCL, right, so you will get directly y parameter. So it is better to write the KCL. Okay, so what are the steps for writing the KCL? आप चाहो तो मैं जनरली KVL लिख के ही सॉल्व करता हूँ, बट इन दिस प्रॉब्लम ये पाई नेटवर्क है तो KCL इज बेटर. KCL लिखेंगे तो क्या आएगा? KCL लिखेंगे तो क्या आएगा? पहला स्टेप क्या है? असाइन द वोल्टेज. ये V1 है तो ये वोल्टेज V1 है. असाइन द वोल्टेज टू ऑल नोड्स. दिस इज द पोटेंशियल, हियर इज V2, सो पोटेंशियल ऑफ दिस इज V2, बिकॉज यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम है. दिस पॉइंट कनेक्टेड टू ग्राउंड. ओके. सेकंड, रिमार्क द करंट थ्रू ईच एंड एवरी ब्रांच. पहला स्टेप क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ नोड्स, असाइन द वोल्टेज टू ऑल नोड्स एक्सेप्ट द रेफरेंस नोड. सेकंड स्टेप क्या है? रिमार्क द करंट. हियर इट इज ऑलरेडी गिवन I1, it is already given I2, no need to change it. Clear? Here you can remark, say I3. मैं रिमार्क करता हूं I3. Here I am remarking I4, for example I4, और यहां मैं रिमार्क करता हूं I5. So you can remark current through each and every branch. Whatever the direction you want, you can take. Clear? But ये दो चेंज मत करो, I1 और I2. ये जो है वैसे ही रखने का. इनकमिंग करंट I1, दिस इज इनकमिंग करंट I2, I3, I4, I5, कहीं भी डायरेक्शन इफ यू वांट यू कैन टेक. नाउ KCL at node 1. What is the KCL at node 1? Incoming current I1 equal to what? I3 plus I4. Okay, I1 equal to what? I3 कितना है? V1 minus 0 upon 2, V1 by 2. V1 minus 0 upon 2, V1 by 2 plus I5 बोलो. I5 क्या है? यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल. What is the potential of this point? यहाँ का कितना है? V2, और यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है? राइज टू V1. तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा? प्लीज हियर, यहाँ का पोटेंशियल, प्लीज दिस पॉइंट, पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट क्या है? यहाँ का वोल्टेज V2, ये माइनस से प्लस, यहाँ से यहाँ राइज हो रहा, तो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है? ड्रॉप. कितना हो रहा है? माइनस. ड्रॉप कितना हो रहा है? 2 V1. देखो क्लियर ना? यहाँ का पोटेंशियल V2 और यहाँ प्लस और ये माइनस, तो यहाँ से यहाँ ड्रॉप हो रहा है कितना? 2V1. सो V2 माइनस 2V1 यहाँ का पोटेंशियल है. ओके, सो I2 क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द रेजिस्टेंस, दिस एंड दिस, V1 माइनस दिस माइनस V2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2V1. राइट ना? ये ना, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V1 माइनस दिस पोटेंशियल, यहाँ का कितना? माइनस दिस. सो माइनस माइनस प्लस, माइनस दिस, और माइनस माइनस प्लस दिस, V1 अपॉन व्हाट? 3 ohm. Okay, so if you solve it, we will get V1 plus 2V1, 3V1 upon 3V1 plus V1 by 2. So you will get 3 by 2V1, right now? V1 plus 2V1, 3V1 upon 3. So V1 यहाँ आ जाएगा और 1 by 2 V1 है, तो 3 by 2 V1 minus 1 by 3 V2 equal to I1. I got this equation for y parameter. Equation number 1. Okay. Equation number 2 लिखना है. So KCL at node
I2 at node 2, यहाँ का वोल्टेज क्या है I2, इनकमिंग करंट I2 equal to, this is incoming current I2 equal to plus I5 is also incoming, plus I5, I2 plus I5 incoming equal to I4 outgoing, I4. So this is incoming I2 at this node, I5 is also incoming equal to I4 outgoing. So I want to modify I2 equal to, right, I4 बोलो, I4 क्या है V2 upon 4, V2 upon 4 माइनस I5 बोलो, I5 क्या है V1 माइनस V1 माइनस यहाँ का पोटेंशियल कितना ये था V2 माइनस 2V1 माइनस V2 माइनस 2V1, ऐसा था ना। पोटेंशियल यहाँ का कितना है पोटेंशियल V2 माइनस 2V1, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा V1 माइनस दिस पोटेंशियल अपॉन 3, सो V2 माइनस I5, ओके ओके। सो I2 इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस 2V1, so V1 plus 2V1, 3V1 upon 3, so it is V1, right ना, V1 माइनस माइनस प्लस 2V1, so 3V1 upon 3 क्या होगा V1, ओके। और यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस V2 by 3 प्लस V2 by 4, राइट ना, V2 by 4 और माइनस माइनस प्लस V2 by 3, सो यहाँ आएगा V2 by 4 प्लस 1 by 4 प्लस माइनस माइनस प्लस कितना V2 by 3, so I am getting I2 equal to V1 minus 12, LCM 12, so 12 by 4, 3 into 1 3 minus 12 by 3 4 into 1 4, so minus 1 by 12, minus minus plus 1 by 12 V2, I am getting it, okay. So I am getting this equation number 2. So I got these two equations, okay. Is it something wrong? Equation number 2 is something wrong, just I'm going to check it. I2 equal to I4 minus I5 बराबर है V2 by 4 minus V1 minus V2 plus 2V1, okay. So I2 equal to minus V1 क्यों, I2 equal to I4, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ एक्चुअली ऐसा है, सो V1 प्लस 2V1 और माइनस है, तो यहाँ माइनस साइन आ रहा है, ओके ओके। और ये V2 by 4 और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस V2 by 4 माइनस माइनस प्लस
plus what? V2 by 4 माइनस V2 कॉमन लिया तो क्या आएगा ये 1/3 प्लस और 1/4 माइनस हो जाएगा ना ये V2 माइनस V2 कॉमन लिया माइनस क्यों लिया ये प्लस है ना ये V2 by 4 प्लस 1/4 और माइनस माइनस प्लस V2 by 3 okay so 12 3 plus 4 7/12 और ये माइनस okay so I am getting compare with the standard equation right if you compare with the standard equation what is the answer you will get so what is the standard equation what is the standard equation I1 and I2 will be represented in terms of V1 and V2 Y11 Y12 Y21 Y22 these are the standard equation right now if you compare standard with the standard equation so one is compared with this so y11 is what y11 equal to 3/2 mho y12 equal to what minus 1/3 mho sorry okay y21 equal to what y21 equal to minus y21 equal to mho and y22 equal to this 7/12 mho so we are getting this answer 3/2 mho minus 1/3 mho minus 1 mho and 7/12 mho 7/12 no 7/12 12 4 so 3 into 1 3 plus 4 7/12 mho okay so I am getting these answers okay these are the y parameter okay and last problem I am going to solve okay so we will one more problem I am going to solve so I am rubbing first okay example number 3 okay find the z parameter so here whenever we have to find the z parameter पहला स्टेप क्या है इसमें इंडक्टर इज गिवन c is given so first step we have to draw the transform diagram we have studied in Laplace transform if the initial condition is 0 this is the inductor c is there 1 ohm is there right so that is V2 of S this is the transform diagram this is the V1 of S okay okay R will be R 1 will be 1 ohm L will be LS we know we have studied in the Laplace transform if the initial condition is 0 R will be R L will be LS L will be LS L कितना है 2 so 2S C will be 1 upon
C कितना है 1/C कितना है 1 into S. So that is the answer you will get. Now both currents will be incoming current, I1 of S and the second current is I2 of S incoming. So take the clockwise direction here, I1 of S, and this is also incoming, so I2 of S. Now write the KVL, loop 1. So क्या आएगा loop 1 में? Loop 1 क्या आएगा? I1 कहाँ फ्लो हो रहा है? 1 plus 2S. So 2S plus 1 में क्या फ्लो हो रहा है? I1 of S. At the same time in this loop current इसमें I2 भी है, so plus क्या है? Plus I2 of S into 1. Okay, equal to what? V1 of S. This is equation number 1. Loop 2 में I2 कहाँ फ्लो हो रहा है? 1 और 1 by S में. So 1 plus 1 by S into I2 of S. At the same time इस 1 में I1 भी है, plus I1 of S equal to 2 of S. Equation number 2. So we have written the KVL in loop 1 and loop 2. Now what is the standard equation of Z parameter equation? Standard equation क्या है? V1 and V2 will be represented in terms of I1 and I2. और यहाँ क्या है? Plus sign is there. Plus sign is there, right? So this is what? By Z11, Z12, Z21, Z22. If you compare with the standard equation, this is Z11. If you compare Z11 equal to what? This. So Z11 equal to 2S plus 1 ohm. Z12 equal to what? This 1. Z21 equal to what? This 1. And Z22 equal to what? This. Z22. This 1 plus 1 by S. कितना आएगा? S plus 1 upon S LCM लेने के बाद. Okay, ohm. So I am getting these values. So these are the values of Z parameter, right? So we have solved 3 numerical, clear? And we have tried to get the concept clear. Once your concept is clear, we will solve some problem related with the dependent source also. Okay, so please see here, I'm going to stop here only in this part 2, and in part 3 we will discuss few more problems depends on the dependent source. Okay, so I'm going to stop it first. I'm going to, so ये जो R और C आ जाते हैं ना, तो उसको क्या करना है आपको? पहले ट्रांसफॉर्म डायग्राम, we have to draw the transform diagram and then we have to solve. Okay, so I'm going to stop here. Thank you very much for listening me.